हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसेन गेमर में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ WWE 2K24 का PS2 मोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये है बेस्ड WWE SVR 2007 के ऊपर, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ये मोड होने वाला है, उसके ग्राफिक्स भी काफ़ी शानदार होने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि टेक्सचर फाइल, सेव डाटा और आईएसओ फाइल। ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एथर SX2 एमुलेटर की, जो एक PS2 एमुलेटर होता है। तो इसका सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक। इंस्टॉल करके इसे डन कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मैं इसे डन कर देता हूँ इंस्टॉल करके। और बायोस फाइल, जो कि ये इसका कंट्रोलर के लिए होती है, ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसको बाद में हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड चीज़, इसका सेव डाटा भी यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सेव डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आईएसओ फाइल को भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक। यहाँ से गए, कॉपी किया, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आईएसओ फाइल है वो भी हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास था सेव डाटा, दूसरा चीज टेक्सचर, और तीसरा जो है हमारा गेम, ठीक है। तो गेम अभी पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिए आप, यहाँ पे होगा ही, है ना। तो हमको थोड़ा वेट करना है, 2 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पूरा गेम वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, अब सिंपली आपको अपना गेम ओपन करना है, ठीक है। एक बार सॉरी, मतलब गेम भी ओपन नहीं करना है आपको, अपना ये ओपन करना, क्या बोलते हैं, एमुलेटर। तो मैं चले जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ अपना एमुलेटर को। ये रहा एथर SX2 एमुलेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। इसके ऑप्टिमल एंड सेफ वाले में रहेंगे। फिर इंपोर्ट बायोस, तो ये जो बायोस फाइल है, जो कि ये रही, मैं आपको दिखाया था शुरू में, बिन डॉट बिन करके आता है। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गेम डायरेक्टरी को ऐड कर लेंगे, जहाँ पे भी आपने गेम रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से अपना गेम यहाँ पे आ चुका है ना। उसके बाद गेम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। गेम की सेटिंग, यहाँ से इनेबल पैच को कर देंगे, इनेबल पैच कोड्स। और क्या रहेगा, ग्राफिक्स में जाके टेक्सचर, ग्राफिक्स में जाना है। और ये जो लोड लोड टेक्सचर रिप्लेसमेंट है, लोड, ठीक है। टेक्सचर रिप्लेसमेंट, लोडिंग, ये दोनों को इनेबल कर देना, बस हमारा इतना ही काम था। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड में जाना है, डाटा में जाना है, और जहाँ पे भी आपको फोल्डर होगा ये वाला एथर SX2 का, इसमें चले जाना है। फाइल्स में जाके यहाँ पे सिंपली इन लोगों को क्या करना है, पेस्ट कर दे रहा है, या फिर कॉपी कर लेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टेक्सचर्स है वो लोड हो गया है। और उसके बाद जो मेम कार्ड है या फिर सेव डाटा, वो भी लोड हो गया। तो हमको टेंशन लेना नहीं है, बस सिंपली अपनी गेम को ओपन करके एंजॉय करना है। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा। और हाँ, अगर आपको कंट्रोलर से जाके मैं इसे कंट्रोल करके दिखा देता हूँ आपको। डुअल स्वैप पे वो कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो गेम है यहाँ पे ओपन हो रहा है, WWE 2K24 बाय MG। मोडिंग जनरेशन काफ़ी अच्छे गेम से बनाते हैं या लाते हैं। तो इस वीडियो को और इस चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है जा करके।
ठीक है? और मैं यहीं से अपनी कमेंट्री ऑफ करता हूँ और मैं आपको चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। Here comes the head of the table, the Tribal Chief. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing the Bloodline. From Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns. Here's a man who's held the Universal Championship for over 2 years. Greatness redefined. That's God mode. Part of the pantheon of all-time greats in the WWE. You can count on one hand the amount of people who've held the championship as long as Roman Reigns. The Tribal Chief of the Bloodline showing off all of his hard-earned gold. And if you're hoping... The American Nightmare is here. The son of a plumber, looking to continue the Rose legacy.
is taking. He's become a leader, a mentor, and a main eventer. Those are all great things to be, Saxton, but we all know what Cody truly wants to be more than anything else is a world champion. Hard times and perseverance, Cody Rhodes embodies them all. All in the name of finishing the story that has eluded his father. Cody seems dead set on reaching the pinnacle in the name of the Rhodes family. He saw that one coming. Oh, come on, King. Angle's an Olympic gold medalist. And he's a multiple-time WWE champion, and he's done just about everything there is to do in this business. He'd be successful no matter where he competed. Yeah, but do you think it's just a coincidence that he keeps moving to less competitive brands? I think Angle's running scared. Oh, come on. Angle's never run from a damn fight in his life, and you know it. I've never seen a challenge set in front of him that he couldn't overcome. Well, you might be seeing one here tonight, JR. It looks like Angle's got his work cut out for him. Boy, JBL sure is a piece of work. He's got every advantage in the world. Money, talent, athletic ability, and it's still not enough. Well, you can't ever accuse the WWE fans of being shy about saying what's on their minds. You sure can, JR, and I don't think we'd have it any other way. Few superstars can claim half the accomplishments of this man, the American Dream, Dusty Rhodes. He's done it all, JR. He's wined and dined with kings and queens, and he slept in alleys and dined on pork and beans. You got that right, King. Like Dusty says himself, nobody cracks whip with the American Dream. He reversed it. This has gone beyond just being a match, JR. I think these superstars genuinely hate each other. There's no love lost between these competitors, that's for sure. If looks could kill, somebody would be pushing up daisies right now. And you've got to admit, that makes for a much more interesting match, JR. It sure does. But I just hope these superstars can settle their differences in the ring and leave it at that. So, how do you think this one's going to turn out, JR? Honestly, King, I have absolutely no idea. Anything can happen here in the WWE. But you've got to have a guess, right? I might, but I'd rather keep it to myself if it's all the same to you, King. I think this crowd has decided to exit. Oh, for the love of... Talk about having no respect for your opponent. Well, if you've got a problem with it, maybe you should do something about it, JR. Boy, when you look at these superstars, it really drives home the fact that Raw is the dominant brand of sports entertainment. Oh, there's no doubt about that, JR. There's not a superstar on the SmackDown roster who could hold a candle to Raw's finest. I wouldn't go that far, King. There are quite a few SmackDown superstars who I'd love to have on. Oh, come on, JR. Why would you want to lower the tone of the Raw locker room by bringing in some losers from SmackDown? King, next time you call The Undertaker, Kurt Angle, and Chris Benoit losers, make sure you give me some warning so I can get the hell out of here before you do it. I don't want to be any part of what that's going to get you. What a counter! I've been looking forward to this match all night, JR. I can't believe it's finally underway. This has been a hotly anticipated contest.
And as far as I'm concerned, it's living up to the hype. No question about that, JR. The fans certainly seem to be into it, that's for sure. And when it comes down to it, that's all that matters. He could pin him right here, JR. That was so close to 3, he could taste it. You got to respect the commitment and the dedication of these superstars to their careers. No question about it, King. Every superstar on the roster has had to make more sacrifices than any other professional athlete I know. It really is like being married to your career. There's not much room for anything else. And marriage is a subject which you happen to be something of an authority. Oh, come on down. How about a little more wrestling, a little less posturing? It's called adding insult to injury, JR. And I think it's great. I think this crowd's giving these superstars... Here's the cover, JR. Here comes the head of the table, the Tribal Chief. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing the Bloodline from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns. Here's a man who's held the Universal Championship for over 2 years. Greatness redefined.